ओके, तो अभी आवाज आ रही होगी आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करने के पहले हमने जो डिस्कशन किया था, विच वेरिएबल्स वी आर डिस्कसिंग ऑन द कैनोनिकल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और कैनोनिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स, जब स्लैक वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं जब लेस देन और इनइक्वालिटी प्रेजेंट हो आपके कंस्ट्रेंट में, तब हम स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं। और जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमें सिंबल दिखते हैं या कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी दिखते हैं कंस्ट्रेंट में, तब हम वहाँ पे माइनस सरप्लस कर देते हैं। ठीक है, तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का बहुत बेसिक जो हम देखा था डेफिनेशन and some example also we are discuss on the standard form. So that's why we are coming to the point simplex method. The simplex method, why we are solving, when graphical method is possible to find the LPP solution, then why we need the simplex variable. तो बेसिक रीजन यही है कि सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते समय हमें मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए आसान हो जाता है, जबकि ग्राफिकल मेथड में 2 वेरिएबल्स के ऊपर अगर वेरिएबल रहते हैं तो हमें वो फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है थोड़ा। इट मे बी क्रूशियल टू फाइंड द सॉल्यूशंस। सो दैट्स व्हाई वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ आवर सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड। बिफोर वी आर राइटिंग सिंप्लेक्स मेथड, वी आर अंडरस्टैंडिंग द सम solutions and some properties or some definitions related to the simplex method. Then we are discuss the algorithm to solve the simplex method. और इसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं पूछेंगे। ठीक है, एलपीपी पर ऐसा कोई इटरेशन दे देंगे वो कि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट हो सकता है। तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम लेते हैं हम, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके टू यू? नाउ लेट्स वी आर डूइंग विद द एग्जांपल्स और सम डेफिनेशन। तो फर्स्ट मतलब सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन मतलब क्या, व्हाट डज मीन बाय द सॉल्यूशन? जस्ट अ मिनट। Okay. Solution is nothing but the set of variables okay. Solution is the set of variables x2 up to xj. It's called a solution to LPP if it's satisfied the constraint. ठीक है, सेकेंड feasible reach solution, feasible solution. So what does mean by the feasible solution?
A set of variables set of variables x1 x2 up to xj is called as feasible solution to LPP if it satisfies the constraint as well as non-negative function या restriction. ठीक है, non-negative restriction. A set of variables x1 to xj is called as a feasible solution to the LPP if satisfied the constant as well as non-negative restriction. ठीक है, यहाँ पे आपके non-negative restriction मतलब क्या, आपके xj वेरिएबल्स है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होने चाहिए. उसी के साथ आपके इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब हम उसे कह सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्यूशन. A solution obtained by setting any m variable equal to 0 and solving for remaining m variables is called as basic solution. Fourth one, ठीक है, a solution obtained by the setting any m variable equal to the 0 and solving for remaining m variable is called as basic solution. Next one is basic feasible solution. Basic feasible solution. Just a minute. थोड़ा लाइट का इफेक्ट दिख रहा था इसलिए मैं उसको थोड़ा ब्राइट कर दिया. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. It is a basic solution that also satisfies non-negative restriction
all variables all variables all variables in a basic solution are greater than or equals to 0. Every basic feasible solution are greater than every basic solution of of problem is an extreme point of convex set of feasible solution of the set of constraint. ठीक है, तो ये क्या है, डेफिनेशन है. It is a basic solution that also satisfy the non-negative restriction. मतलब exist should be greater than or equals to 0. All basic variables in a basic solution are greater than or equals to 0. तो बेसिक वेरिएबल्स क्या चाहिए आपके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चाहिए, मतलब b की वैल्यूज. Every basic feasible solution of the problem is extreme point of the convex set of feasible solution of the set of constraint. Convex set कल ही हमने डिस्कस किया था. सपोज दिस इज द फंक्शन, ये दो फंक्शन लेते हैं हम. अगर ये सेगमेंट, अगर दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं तो वो पूरे उसी रीजन में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, here in this circle all the points are belonging to the region, but in this case this point and this point, if we are drawing the line, the segment is out of the region, so that's why it not convex and it is a convex. Clear? तो कॉन्वेक्स के लिए हमने कल डिस्कस भी किया था इसका. नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट non-degenerate basic feasible solution. Non-degenerate basic feasible solution. It is a basic solution, basic feasible solution in which all the n basic variables are positive
and remaining m variables are 0 each. Okay, for degenerate basic feasible solution, okay, BFS. It is the basic feasible solution that also optimize the objective function and last one is unbounded solution. Okay, it is a basic solution in which, और इसे हम चेंज कर देते हैं, it is the basic physical solution that also optimize the objective function. इसे optimal solution कहते हैं, basic feasible solution. And last one is unbounded solution. It is the value of the objective function can be increases or decreases, indefinitely. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन. नाउ वी आर कमिंग टू द सिंप्लेक्स एल्गोरिदम. ओके, सिंप्लेक्स मेथड के एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे. देन वी आर सॉल्विंग सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सिंप्लेक्स. Let's स्टेप्स लिख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप है हमारी सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए. ठीक है, set up the LPP, in the standard form with objective function मैक्सिमाइजेशन टाइप. ठीक है, तो ये दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है सिंप्लेक्स मेथड, एक मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन टाइप से. तो हम सिर्फ मैक्सिमाइजेशन टाइप डिस्कस करेंगे, जिससे वन मेथड इज सफिशिएंट टू सिंप्लीफाई द आवर प्रॉब्लम्स. ठीक है, सेकेंड वन इज
find out initial basic feasible solution IBFS. Third one, determine whether better basic feasible solution is possible. If not, then optimal solution has obtained. अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड. ओके, पॉसिबल. इफ नॉट, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज ऑब्टेन्ड. ओके, determine whether the better basic feasible solution is possible. If not, then optimal solution is. अगर आपको बेहतर और कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं इटरेशन. नेक्स्ट वन इज फोर्थ. if better solution is possible, then proceed to step 4. Now what is the step 4? Step 4 is identify a variable whose incremental contribution to a variable whose incremental contribution to the objective function is the greatest. Next one, identify the variables whose incremental contribution to the objective function is greatest. जब Cj माइनस जेड से फाइंड आउट करेंगे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रिलेटेड हम वैल्यूज देखते हैं. ठीक है, जैसे हम उसको लिखेंगे सिंप्लेक्स का, हम जब टेबल क्रिएट करेंगे तब ये सभी चीजें वहां पे आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है, आइडेंटिफाई the variables to remove from basic feasible solution. Here the variables identify at fourth step in
इंट्रोड्यूस टू सॉल्यूशन, इंट्रोड्यूस द सॉल्यूशन। 6 नंबर का ये सेकेंड लास्ट स्टेप है ये। उसके बाद में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो क्या है, परफॉर्म नेसेसरी, परफॉर्म नेसेसरी confirmation to introduce to entering variable, identify in the step 4, okay, and remove the corresponding variables, variable identified step 4, ठीक है। और लास्ट है रिटर्न इन स्टेप 3 till you come to the conclusion, come to the, ठीक है। So let we are discuss one example and we are applying the all steps to this example. Maximum z is equals to 2x1 plus 3x2 subject to the constraint is 3x1 plus 6x2 less than or equals to 24, okay. 2x1 plus x2 less than or equals to 10, 1 x2 both are greater than 0, ठीक है। तब इस फंक्शन का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। चलो लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है इस एग्जांपल का, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस एग्जांपल, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म, बताइए। मैक्सिमम का फंक्शन एज इट इज रहेगा 2x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट में क्या होगी, जो लेस देन और इक्वल टू है उसे हम क्या करेंगे, इक्वालिटीज में लाएंगे कंस्टेंट्स को। तो कंस्टेंट को इक्वालिटी में लाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। So here you can observe that constraint 1 and constraint 2 both consist the slack variables. So the statement will be, or constraint will be, your look like 3x1 plus 6x2 plus s1 is equals to 24 and 2x1 plus x2 plus s2 is equals to 10, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके दो कंस्टेंट हो गए। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर दिस एलपीपी, okay. So let's we are doing here, the standard form प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, 3x1 प्लस 6x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 s1। सेकेंड इज 2x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और x1 x2 s1 s2 are greater than or equals to 0, ठीक है। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स,
Now here n is number of variables. And m is defined as number of equations. ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपके x1 x2 s1 s2. ठीक है, देयर आर 4 वेरिएबल्स, इक्वेशंस आर 2. वी आर टेकिंग टू ऑब्टेन इनिशियल बेसिक फिलेशन, obtain initial basic feasible solution is n minus m is equals to 4 minus 2 equals to. ठीक है, तो substitute two variables at zero level. ठीक है, दो वेरिएबल हमें जीरो पे सेट करना है, तब जाके हमें सॉल्यूशन मिलेंगे. तो अगर x1 और x2 में जीरो जीरो सेट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके नॉन बेसिक वेरिएबल. तो S1 जो मिलेगा आपको यहाँ पर 24 होगा, और S2 जो मिलेगा वो कितना होगा 10. ये क्या कहलाएंगे, बेसिक वेरिएबल्स. बेसिक वेरिएबल्स. बेसिक वेरिएबल्स. क्लियर. Now we can say that creating the simplex table. ये आप create करना है simplex table. So first of all I will write like this. Corresponding variables. Okay, some iterations we are making here. Okay, ठीक है, इसको हम CB, coefficient of basic variable, XB, बेसिक वेरिएबल्स. ठीक है, CJ and solutions, coefficient of objective function and solutions, x1 x2 s1 s2, and last one is your ratio, which is called as b upon xg. से हम b upon xg भी लेते. ठीक है, preparing the columns of these. Okay, now we are writing the some values of here. CJ B. ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशंस लिखते हैं हम पहले. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट क्या है, 2 3 0 0. तो इट विल बी रिटन एज 2 3 0 0. okay, next is your basic variables are s1 and s2 with the solution is 24 10.
S1 S2 sorry S1 S2 with solutions 24 and 10, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स लिख लिया हमने। तो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, 0 0 है वेरिएबल्स के। क्लियर? नाउ वी आर राइटिंग हियर S1 के कितने हैं यहाँ पे 3 6 1 0, नेक्स्ट इज 2 1 0 2 1 0 1, ठीक। यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 0 1, ठीक है। इस जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है, और ये दो वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लेट्स वी आर कैलकुलेटिंग द सी जे माइनस जेड जे, ओके। जेड जे इज सी जे माइनस जेड जे। तो जेड जे किस तरह से फाइंड करेंगे, 0 इंटू 3 0 इंटू 2 इट विल बी द 0। तो सभी के लिए क्या होएगा, 0 हो जाएगा। अब सी जे क्या है आपका, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 0 इज 3, 0 0, ठीक है। Now here you have to choose the maximum value. Okay. Now you are selecting the maximum value. So this maximum value you are selected, we are writing the corresponding column b upon x2, okay, b upon x2. So 24 by t is equals to, sorry, 24 by 6 is equals to 4, and 10 upon 1 is 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम तो हमने देख लिया, तो अब मिनिमम क्या होगा यहाँ पर आपका, दिस वन। So this is the removing variable and this one is the entering variable. So we are select this one. Okay. Pivot quantity. ये pivotal quantity बताएंगे हम। अगर इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका न्यू इटरेशन में वैल्यूज क्या होंगे, देखिए S1 रिप्लेस बाय द X2 नियर S2। अब यहाँ पे 1 चाहिए हमें, ठीक है। तो पूरे इटरेशन को क्या करोगे आप, R1 स्टार, ओके, ओल्ड वेरिएबल्स का डिवाइड बाय 6, ठीक है। सो यू विल गेट हेयर 6 से डिवाइड करोगे तो 3 बाय 6 इज 1 बाय 2, 1 1 अपॉन 6 0, ओके। नाउ वी हैव टू मेक दिस क्वांटिटी इज 0। 6 के नीचे वाली क्वांटिटी क्या करना है, 0 करना है। तो ये अभी 1 हो चुका है, ठीक है, ये पहला रो हुआ। तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा आपका, न्यू वेरिएबल R1 माइनस ओल्ड वेरिएबल R2, R2 माइनस R1 करना, R2 माइनस न्यू R1, ठीक है। तो 10 माइनस 4 इज योर 6, 2 माइनस 1 बाई 2, तो 2 में से हाफ गए, 1 एंड हाफ, तो 3 बाई 2 वी कैन से दैट। नेक्स्ट इज योर्स next value, calculate the value similarly, okay। Again we are coming to the next iteration। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है आपकी, चेक करिए, ओके। अब जेड जे फाइंड करेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है आपका यहाँ पर, सही, x2 का 3 है, तो 3 इंटू 1 बाई 2 इज योर्स, कितना आएगा बताइए जल्दी, 3 बाई 2,
3, 1 by 2 and 0. CJ 2 minus 3 by 2 is half. 3 minus 3 is 0, minus 1 by 2 and 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज मैक्सिमम. तो अगेन एंटरिंग वेरिएबल वी आर एग्जिस्ट हेयर. तो अब x1 अपॉन b अपॉन x1 करेंगे. तो 4 अपॉन 2 ई 4 अपॉन 1 by 2 इज योर what is 8 and 6 into 3, 18 by 2. So it will becomes to, sorry, we are doing wrong, 6 upon 3 by 2. So what will be the answer is 4. It is removing variable. तो entering and removing हमें मिल चुके हैं. तो आपका pivot quantity क्या होगा? This one is a pivot quantity. तो multiply by 2 by 3 to the iteration. 2 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसको मिलेगा. और वेरिएबल लिखेंगे हम यहाँ पर. आपका एंटरिंग वेरिएबल को है अभी x2, x1 और ये लास्ट. Who is your entering variable now? तो x1 को क्या करोगे आप? अभी 2 by 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 2 by 3 इंटू x1 ओल्ड. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा 2 by 3 12 4. तो यहाँ पे कितना होगा? 4 4 then 1 0 2 by 3. तो थोड़ा 3 काटा 1 by 9 minus 1 by 9 it comes and it is a 2 by 3. तो अब R2 की R1 के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 0 करना है आपको. 1 by 2 है तो फर्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो R1 ओल्ड. ठीक है, R2 सॉरी 2 R2 R1 minus 2 times of R2 1 by 2 सॉरी. इसका ओल्ड न्यू वाला, ये ओल्ड वाला. ठीक है, ओल्ड एंड न्यू वेरिएबल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा. नाउ वी कैन से दैट इट इज नाउ वी आर कन्वर्टेड. So what are the values will be becomes here after this? 2 0 1 2 by 9 minus 1 by 3. So ZJ's values come as, we are directly writing CJ minus ZJ now, minus 3 0 minus 4 by 9 and minus 1 by 3. If you are calculating then you will get the values. Okay, so these are the values related. Or it will be the. तो इस तरह से हमें सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करना है. यहाँ पे अभी देखो CJ माइनस ZJ सभी छोटे हो गए 0 से. तो देन वी हैव टू स्टॉप द इटरेशन. इस समय हमें इटरेशन क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा. तो व्हाट वी आर राइटिंग, कंक्लूडिंग द कंक्लूजन here. Here, just a minute.
sorry for inconvenience. Okay, here now we are writing the conclusion of this. Here all Cj minus Zj less than or equals to 0, the current basic feasible solution is x1 is equals to 4 and x2 is equals to 2 and s1 0, मैक्सिमम z फाइंड करेंगे हम. क्या है मैक्सिमम z हमारा 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू आवर्स. क्या होगा यहाँ पर अभी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए. 2 4 प्लस 3 2 8 6 it is 14. It is 14. Okay, now we are solve this solution. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 और x2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तब यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसे हम कह सकते हैं. यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आपके जो इटरेशन देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने मार्क किया है ये क्या है, आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. ठीक है. और जो रेड कलर में हाईलाइट किया हमने, सर्कल या स्क्वायर किया है, तो ये क्या है, पाइवट क्वांटिटी. रेशो किस तरह से फाइंड करना है, इंटरिंग वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करना है, लिविंग वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करना है, ये यहाँ पे हमने सभी कंक्लूड किया है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. तो समझ में तो आ रहा होगा आपको सभी को. ठीक है. नेक्स्ट आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके लिए. मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 20x1 प्लस 10x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट होगा आपका 3x1 माइनस 3x2 5x3 लेस देन और इक्वल्स टू 50 minus x1 minus x3 greater than or equals to minus 10 x1 minus x2 plus 4x3 less than or equals to 20. Okay, and x1 x2 x3 are greater than or equals to 0. ठीक है. एक एग्जांपल है होमवर्क के लिए. और यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ आपके सॉल्यूशंस क्या आएंगे. ठीक है. तो S1 और S2 की वैल्यू क्या होगी, S1 is yours 50, S2 is equals to 10, 20. ठीक है. और यहाँ पे आपके फाइनल सॉल्यूशंस क्या आएंगे वो आपको फाइंड करना है. डू इट. ओके. ये अगर आपके सही आते हैं बेसिक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 और maximum z. Similarly, I will one more example is given to you which is related to the simplex method, but you have to use the artificial variable here. Okay. artificial variable क्या होगा, जब सरप्लस वेरिएबल आपका ऐड होता है इसमें, तो वहाँ पे आपको एक वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होगा, जैसे कि a1. ठीक है. एक वेरिएबल न्यू इंट्रोड्यूस कर लीजिए a1, देन वी कैन राइट द आर्टिफिशियल. ट्राई टू सॉल्व दिस वन ऑल्सो.
maximum z is equals to 6x1 plus 4x2 subject to the constraint 2x1 3x2 less than or equals to 30. Twenty-four x1 plus x2 greater than or equals to, ठीक है, x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन 0. यहाँ पे भी हिंट दे देता हूँ, s1 30 s2 4 और यहाँ पे आपका एक वेरिएबल ऐड होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू होगी आपकी 3. ठीक है, यहाँ पे s3 भी होगा पर s3 की वजह से हमें मैट्रिक्स मिल नहीं पाता है. ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 आता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट नहीं हो पाता s1 s2 s3, इसलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से. ओके, अगर S3 का इफेक्ट हम हटा ही देते हैं, रुक, तो इसे S1 S2 A1 कर देना. ठीक है, ये आपके लिए होगा सॉल्व करने के लिए. ठीक है, आई होप यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ड्यूअल ऑफ LPP के साथ. तब तक के लिए आप ये सॉल्व करना और डिस्कस करना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना. हैप्पी लर्निंग, थैंक यू. लिख लीजिए एग्जाम्पल.